everyone. Very good morning to you guys. I'm sure you guys must be excited that a new journey of yours begins today with this induction. And I would like to begin with a quote that says, "Nothing great will be achieved without the great men. And men are only great if they are determined to do so." And ladies and gentlemen, with this quote, I'd like to say that with the guidance of our Honorable Chancellor Sir Dr. P.D. Patil and Dr. Bhagyashree Patil ma'am, our Pro-Chancellor, and our Honorable Vice Chancellor Sir Dr. Pawar. These are the few distinguished gentlemen and lady who have toiled, have worked hard, and through their philanthropy, they have built this magnificent organization that inspires us all to give you the quality education for the young minds that you are and the future managers that you will be. Our Honorable Trustee and Executive Director, Dr. Smita Zadav ma'am, is also a source of inspiration, and because she's herself a very dynamic woman and a go-getter herself. She aspires that you all get inspired to be better managers, better human beings in the life to come. I'd also like to quote, it says, "It's never too late to become what you want, and every moment is a fresh beginning." And with this quote, I'd like to start off today with the lighting of the lamp and Saraswati Vandana to follow. Light and brightness has always been equated with positivity, and motivation is seen as the harbinger of good. To start this off on an auspicious note, we will now have the lamp lighting ceremony, for which we have an esteemed dignitaries amongst us. May I request and welcome Honorable Dr. P.D. Patil Sir, Chancellor Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth, Pune, to light up the lamp. Along with, I also request and welcome Honorable Dr. Bhagyashree Patil Ma'am, Pro-Chancellor Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth, Pune, to light the next week of the lamp. May I request and welcome Dr. Smita Zadav Ma'am to light the next week of the lamp. I also request and welcome Honorable Dr. N.J. Pawar Sir, Vice Chancellor Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth, Pune, to light the next week of the lamp. I also request and welcome Dr. A.N. Suryakar Sir, Registrar Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth, Pune, to light the next week of the lamp. I request and welcome Honorable Mr. Sushi Aggarwal Sir to light the next week of the lamp. I also request and welcome Dr. Safia Farooqi Ma'am, Director Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth Center for Online Learning, Pune, to light the next week of the lamp. The lamp is now lit on this auspicious inaugural. We must grace this occasion by Saraswati Vandana, the symbol of goddess of learning, knowledge and wisdom. Thank you. A pessimist always complains about the wind. An optimist tries to change it, and the leader adjusts the sails. So the director of Center for Online Learning, Dr. Safia Farooqi, is this leader who keeps guiding us, motivating us, and she is the one who actually brings the best in us
and helps us become to aspire better human beings, better people, and of course, better faculty members as well. With this quote, I'd like Dr. Safia Farooqui to give you guys all a message. Warm welcome to all of you to this wonderful journey of education with us, to Dr. D.Y. Patil, Vidyapeeth, Center for Online Learning. I humbly welcome you all for this wonderful journey with us. Today I am going to talk about keeping the spark shining, or to put it another way, how to be happy most, if not all the times. The first aspect is nurturing and to give up the spark, the fuel, continuously. The second is to guard against storms. When we grew up, where money constrained force everyday choices, financial freedom is a big achievement, but it's not the purpose of life. If you study hard, you can improve your rank. If you make an effort to interact with people, you will do better in interviews. If you practice, your cricket will get better. You may also know what you cannot become Tendulkar yet, but you can get to the next level. Striving for the next level is important. I welcome you again to the most wonderful years of your life, but I hope that 10 years later as well, your eyes will shine the same way as they do today, that you will keep the spark alive, not only through college, but through the next 2,500 weekends. And I hope that you all will keep that spark alive. My best wishes to all of you, and I assure to all of you that myself and my entire team will be there to help you in this 2 years of journey, and we all are there for you to help you every time and all the time. Once again, welcome to Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth, Center for Online Learning. Thank you. Thank you so much, Dr. Farooqui. That was a wonderful message, very heartwarming. With this now, I'd like to invite Dr. Yogesh Ozare to introduce the guest for today. Yes, sir. Thank you, sir. Good morning, everyone. It gives me an immense pleasure to introduce Mr. Sushil Kumar Aggarwal, sir, our today's speaker for DEEKSHARAMBH. Mr. Sushil Kumar Aggarwal, sir, a visionary entrepreneur and philanthropist, and he's also the promoter and chairman of Avro India Limited, which was founded in 2002. His vision has been pivotal in the growth of the company. His company has grown manifold in the last 20 years, anchored by his great commitment and perseverance. Mr. Sushil Kumar Aggarwal, sir, has invested in increasing and expanding the manufacturing capabilities and committed to growing it in the future. Mr. Aggarwal is also the pioneer of one of India's top plastic molded furniture companies and has received many awards for his contribution in the MSME industry. The latest felicitation were by the UP government, and he is also being felicitated by Z Group for exceptional contribution towards the matters of the nation and their families. He is currently the vice chairman of CII UP, and he's also the member of various industrial bodies like IIA, SGT Road Industry Area, and another industry leader. He's also the national president of All India Plastic Molded Furniture Manufacturing Association. So without taking too much of time, I heartily welcome Mr. Sushil Kumar Aggarwal, sir, to address all participants in this place. Please welcome. Thank you, sir. Thank you very, very much. And very good morning to all of you. My sister, Dr. Safia, of course, Professor Sohail, Yogesh, sir, everybody, all of you. My voice is breaking? No, sir. No. All right. Okay. Somebody put in a message. All right. So I think it's very overwhelming and heart-rending for me personally, because I must have done hundreds and thousands of sessions, must have addressed about 500,000 people
but I think probably this will be for the first time that I'm doing with more than 1,000 people on Zoom. And there are a couple of them, I'm sure, on Facebook Live also and YouTube, etc. So for me personally, it's such an honor and pleasure to be part of D.Y. Patil's this whole universe of education, imparting education, and overwhelmed. But friends, before I begin, I'd like to also make a comment and observation, or rather, admit who I am. अभी मेरे बारे में बताया गया. I will use Hindi and English both, so I hope you are comfortable. My introduction was done with a great amount of elan and grace, and thank you very much, sir, for all this. But let me tell you, friends, that I was born very poor, so poor that at one point I had no money even to eat proper food. I could never ever go to college. I never seen door of college. But today, as sir said, or Safia ma'am also have a lot of appreciation, and Sohail sir also, Smita ma'am, etc., everybody. Today, not only I run this company, which is listed on National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange, but we are India's premier organization, fastest growing. I'm also national president, as they said. I'm also chairman of CII at this point. I was vice chairman last year. I'm chairman right now. I also go to about 35 odd colleges, and I teach MBA and engineering students. I'm also a governor and advisor to more than a dozen colleges. So what is very important for my students here to understand, कि यार सुशील अग्रवाल ने ऐसा क्या किया? How is it that somebody who had never any background, any such, checkered, any, let's say, illustrious history could actually be here and doing all this that he's talking about? And we are not only the fastest growing company, in times to come, we would be a kind of conglomerate. If that being the case, there is something that I would have done something very different and exceptional. And I'd like to share my journey all along and the tenets or the needs that you have to develop and inculcate that would actually help you to become that veteran and that leader of this nation. And fortunately, we are a democratic country with huge value systems and streams. What a great law and order, and what an ecosystem. And today, India is driving the global geopolitics. And if that being the case, I think we are at the cusp of that huge explosive growth that our country has never ever witnessed in modern or ancient history. And if that being the case, this country belongs to you. You are the rightful owner. And if that being the case, you have to prepare yourself to take the onslaught of what is happening in times to come in terms of technological leap or the imbalances that are getting created on various fronts, right from economically to the position wise in terms of the strengths that countries are exhibiting today. And I'm sure the cannibalization is happening. Russia has invaded Ukraine because it could find it to be prey. And India also probably fell in lap and probably was vulnerable, but now everybody knows that India is one of the most powerful country in terms of the policy advocacy, and as well as they say that we have the geopolitics. And if that being the case, I think being the front runner, the torch bearer of this nation, you people have a great onus at this point of time. The responsibility that you hold is immense, and you should be very proud of being an Indian. And I will tell you while we go along, what is it that is desired? Friends, I'm not here to make it a monologue. मुझे आपसे ना बात करनी है. I want to talk. I know that I can't see everybody here, but I'm sure Professor Sohail would have a mechanism where you can put in your questions and your answers in the chat and all the things. I'll pick it up quickly, and I want to have a dialogue. And I would like to also not only share my journey and what I think is desirable for you to become a great human being, to be successful in the life, but I will also try to give you my number, my detail, etc., so that you can connect me offline later also in terms of mentoring and guidance, whatever needs to be done. I'm already mentoring a couple of startups, and I'd like to before I begin, I'd like to say that my colleagues and friends who are actually helping a lot of startups in the industry today.
and more than 240 crore rupees of funds was disbursed to about 19 funds about 2 years back, and new funds have been created. So because being chairman of CII Western UP has a great potential, a great value, and the kind of connect that I have at this point of time, I'm more than happy to accommodate all of you, not only in terms of the virtual or maybe physical industrial visits to various places, right from even Pune for that matter, because I connect across country. But anywhere Northern India is of course preferred. So in terms of industrial visit, internship, or the jobs, or anything of that kind that is required, or even for that matter any guidance that is required, and all this will be done by me pro bono, free of cost, till my last breath. This is my first commitment to, and that's where I begin now. So let me just start, and I'll share my screen. I hope all of you can see this. So it's a DEEKSHARAMBH, and my sincere thanks to Dr. P.D. Patil, sir, Honorable Chancellor, Dr. Mrs. Bhageshwari Patil, ma'am, Honorable Pro-Chancellor, Dr. N.J. Pawar, sir, Honorable Vice-Chancellor, Dr. Smita Jadhav, ma'am, Executive Director and Trustee, Dr. Safia Faruqi, ma'am, Director for Center for Online Learning, HODs, Professor Sohail, everybody, HODs of all departments, faculties, staff, and students, for giving me this opportunity to present these sessions to all of you. So now, what we are talking is life in VUCA world. I will not straight away ask you what VUCA is, but I'll just show you. VUCA is, I'm sure you must be aware of it because you're all MBA students, but anyway, it's a volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Can you imagine how complex the world has become now? It's very ambiguous, and you don't know. There are uncertainties. We were talking about 9.5 to 10% of GDP growth, but Reserve Bank of India today scaled it down to 7.5%. We never ever thought that something like Ukraine would happen, or probably the hydrocarbon prices might go up to the kind of extent that they have gone. All the commodities prices have shot to the roof. So what I'm trying to imply, and of course we never ever thought that we can have something like COVID coming and it has taken away 2 years of sheen out of our life. But in spite of that, we not only survived, but probably we are the best and the fastest. Let me tell you, friends, before I really want to start this, and saying, at this point of time, India is the fastest growing economy in the world. This is very important for you to know. And I'm sure in terms of geopolitics, you are aware of it, what is happening in Sri Lanka or Pakistan or neighboring countries and all the things, how they are in some kind of a doldrum. They are having challenges in terms of their own economic conditions, etc. But India is so much insulated and so much in the forefront and so fast growing. And we have that great exuberance, the kind of inertia that has got created at this point of time, we never ever had. अपने देश में ऐसा कभी था ही नहीं, इतना अच्छा माहौल कि in spite of all this pandemic, to the GST, to the demonetization, to so many things that happened in the country, in spite of that, economy falling in line, and in the lifetime of nation, we had the highest collection of GST last month. That reflects that, the buoyancy in terms of direct and indirect tax is very high. The commodity prices have risen, right from the gold to the property, to the stock markets, etc. Everything is growing. What does it mean? It means we are safe. Not only we are safe, but we are actually roaring. We are tiger of the world. And I'm sure हम सोने की चिड़िया थे, और आज अगर हमसे कोई कहता सोने की चिड़िया नहीं है, तो हम थे, हैं और रहेंगे. हमें सिर्फ अपने आईने के ऊपर से सिर्फ वो मट्टी जो पड़ी उसको साफ करना है. And the moment you clean that, you will see, oh my God, we are the Kohinoor of the world. We are the people who are actually running the whole world for that matter. And I'm sure ये कहने की जरूरत नहीं है, आप बच्चे सब समझदार हैं. पूरे world के top corporates are being run by Indians, and it's a proud moment for all of us for here, to be talking about this. And I can tell you, friends, this is just a beginning. ये मत सोचिए यहाँ पे end हो गया. No, it's a traction. Today, even let's say the Finance Minister of England is an Indian. So it's not an easy job, or to be actually running, let's say Canada, Defense Minister being an Indian and all that. So what is happening is we have gotten to the places where we have become the decision and policy maker. We are changing the geopolitics. We are changing the way the whole world looks, and India being a tolerant country, and we are somebody who are taught Buddhism to the Jainism to the Sikhism to whatever, Hinduism, etc. And the kind of ecosystem that we have created. We are the best in the world. This is something that I'd like to begin with. And I would like to now say, how to face those challenges in such volatile, uncertain times. Let's begin with that.
And to begin, I'd like to first say and salute कि सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्ने पूजक. आज होता क्या है? We always believe that God lives in मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा. Yes, it does, no doubt. लेकिन क्या आप जानते हैं और आप समझते हैं, महसूस करते हैं इस बात को? Your own mother and father, your mother created you from her womb. अपने शरीर से पैदा कर दिया. आपकी आंखों के सामने दिन रात सुबह शाम वो माँ नहीं है, भगवान है. She created. So I think mother is the embodiment of pilgrimage. वो पूरे तीर्थ स्थानों का एक संगम है और पिता उसमें बैठी हुई मूर्ति है. तो मैं इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अपने माता पिता को सम्मान दें, नमस्कार करें, उनको धन्यवाद करें. अब आप मेरे से जब बात भी कर रहे हैं, आप चैट में भी डाल सकते हैं, थैंक यू माँ, थैंक यू डैड, व्हाटएवर जो भी आपको कहना है, एंड जो भी आप रेस्पेक्ट देना चाहते हो, प्लीज गो अहेड, बिकॉज आई लाइक टू मेक इट वेरी इंटरेक्टिव विद ऑल ऑफ यू. आप अपने माता पिता को सम्मान दें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है मेरी आपसे. और आप चैट के अंदर दिल खोल के डाल सकते हैं, थैंक यू माँ, थैंक यू पा, जितना भी आपको बोलना डाल सकते हैं, प्लीज गो अहेड. ऑलराइट. एंड अगर जो हम आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों आप ये बात जानते हैं, कम वॉट में आज माता पिता ने पैदा किया, उनसे बड़ा भगवान और गुरु तो हो ही नहीं सकता. दे आर द फर्स्ट गुरु. बट लेकिन इसके बाद जिंदगी में जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो यू नीड समबडी टू गाइड यू फ्रॉम दैट डार्कनेस टू लाइटनेस. एंड कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. यानी कि आपको डार्कनेस से लाइटनेस तक आपका गुरु ही लेके जा सकता है. कभी कभी इंसान सोचता है मुझे गुरु की जरूरत क्या है. Guru is just not spiritual guru, my dear friends. Guru is anybody who guides you, it becomes guru. It can be your own child, your own friend, your own whatever, your spouse. Anybody can be guru. मेरे 4 गुरु हैं, 5 गुरु हैं, and I'm always seeking that, I'm in a quest and research for education, for knowledge, and I can assure you, आखिरी सांस तक जितना भी आप सीख लो, आपको लगेगा कमी है. और आप कितने खुश नसीब है. D.Y. Patil, it's a universe. It is not a university, it's a universe. And if that being the case, with the kind of purpose that this university has been created, you are very lucky to be part of that particular organization. कभी कोई लोग बोलते हैं मैं MIT में होता, हार्वर्ड में होता, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में होता, IIM में होता, ISB में होता, तो पता नहीं क्या कर डालता. तो इसका मतलब क्या वहां के सारे बच्चे सारे वर्ल्ड को रन कर रहे, टॉपर है, बेस्ट है, बाकी बच्चे कहीं और नहीं जाते, क्या वो आगे नहीं बढ़ते? तो क्या हम D.Y. पाटिल इंस्टीट्यूट का नाम आने वाले वक्त में रोशन नहीं कर सकते? क्या आगे नहीं लेके जा सकते? क्या प्राउड एलुमनाई फील नहीं कर सकते? क्या हम अपने इंस्टीट्यूशन को, अपने एलुमनाई को, अपने गुरुओं को, उनको सम्मान देकर के, गुरु कभी भी ना इज्जत और प्यार सम्मान का भूखा होता है, वो चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे आगे चला जाए. गुरु और पिता ये 2 ही लोग ऐसा सोच सकते हैं. तो ऑल ऑफ यू प्लीज पे योर रिस्पेक्ट्स टू योर गुरु. यू कैन पुट इन योर चैट थैंक यू सर, थैंक यू मैम, किसी के नाम से भी आप डालना चाहिए तो प्लीज फील फ्री, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस. इफ आई टेल यू आई लव यू, you are hearing my words, I love you. But if I just think I will love you but I don't say, it doesn't matter. आपको थोड़ी पता लगेगा कि did I say that I love you or not. But when I say, I express कि I love you, that means that I'm expressing. So your response automatically in a way would be, yes, I love you too, I love you too, kind of. तो आज चाहे माता पिता हो चाहे गुरुओं को सम्मान बनता है. तो इसलिए you can put in your chat and say, thank you sir, thank you ma'am, thank you anybody, please feel free to put that, because it is very important to acknowledge. आप जब ताली बजाते हैं ना, why do you clap? It's a validation. What validation? You say कि जो भी आपने बात कही मुझे पसंद आई, मुझे बहुत अच्छी लगी, oh my god, I'm loving it. That validation will actually drive your mind and it will guide your mind कि hello, ये बात मुझे पसंद आ गई है, मुझे समझ में आ गई है, मुझे जिंदगी में इसको एक्सेप्ट करना है, अडॉप्ट करना है, इसलिए मैं तालियां बजा रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. This is acknowledgement. That is a validation. ताली बजाने का मतलब जब आप किसी को बोलते हैं थैंक यू मैम, थैंक यू सर, तो क्या गुरु को आपको नहीं लगता कि गुरु को अच्छा लगेगा? गुरु क्या करेगा? आशीर्वाद ही तो देगा ना. जब आप किसी के चरणों को छूते हैं तो क्या करेंगे? सौभाग्यवती रहो या खुश रहो, ऐसा कहते हैं ना. तो प्लीज नेवर एवर शाई टू एक्सप्रेस एंड एक्सप्लेन योर फीलिंग्स एंड एक्नॉलेज थैंक्स टू योर गुरुज. एंड दिस इज अ ग्रेट टाइम फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज राइट नाउ यू आर ऑन चैटिंग, यू आर ऑन ऑनलाइन, यू आर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली, and for you to
एक्नॉलेज एंड से, क्योंकि आप जैसे ही करेंगे तो आपके गुरुओं को दिल से कहीं ना कहीं महसूस होता है, जैसे टेलीपैथी होती है ना, माँ को महसूस होता है कि मेरे बच्चे को तकलीफ हो गई है या मेरा बच्चा खुश है, दुखी है, एग्जैक्टली गुरु को ऐसे ही फील होता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप गुरु को नहीं ढूंढते हैं, गुरु आपको ढूंढता है। अगर जो आप सोचे मैं गुरु को ला सकता, तो एक काम कीजिएगा, आप ऐसे गुरु को ढूंढ लीजिएगा जो आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट बना दे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन प्राइम मिनिस्टर बना दे। ऐसे गुरु को ढूंढ लीजिएगा। नहीं ढूंढ सकते आप, लेकिन गुरु आपको ढूंढ लेगा। कैसे ढूंढ लेगा? क्योंकि आप उस क्वेस्ट में, आप उसकी नॉलेज में, आप उसकी लर्निंग पे, आप उसकी तरफ जा रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप पूरे विश्व के अंदर आप अपनी वाइब्स भेज रहे हैं कि मुझे गुरु चाहिए, मुझे गुरु चाहिए जो मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे, मुझे जो प्रेसिडेंट बना दे, मुझे इंडस्ट्री लीडर बना दे, मुझे गुरु चाहिए। गुरु को आवाज जाती है, गुरु ढूंढता है, यस ये रहा मेरा बच्चा, दिस इज द वन यू नो आई वाज लुकिंग एट एंड ही विल जस्ट चेरी पिक यू। तो ये गुरु की चॉइस है, आपकी चॉइस नहीं है। इसलिए जहां गुरु को मौका मिले, जहां मिले आपको मौका, तो गुरु को सम्मान के साथ हाथ जोड़ के विनती करके, गुरु जी प्लीज हेल्प मी, प्लीज सपोर्ट मी, एंड आई एम श्योर जो गुरु आप पे मेहरबान होगा, आप समझ लीजिएगा आपकी जिंदगी बन जाएगी। क्योंकि आज आप जो भी है, the only differentiator between you and an ordinary person walking on the road और जो ठेला लगाता है, उसके बीच में एक ही चीज का फर्क है, आपके पास शिक्षा है, उसके पास उसका अभाव है। You know, just recognize। ऐसा मत सोचिए वैल्यूज उसके पास कम हो गया, आई एम सो सॉरी, उसके पास वैल्यू हमसे ज्यादा होगी, वो हमसे ज्यादा मेहनती, हमसे ज्यादा ईमानदार होगा, लेकिन शायद शिक्षा का अभाव उसको ना बहुत सारी चीजों में अपना विवेक यूज करने की ताकत नहीं देता। आपके पास वो ताकत है। फिर जब डाउट में है तो आपके पास गुरुओं का साथ है जो आपको सुबह शाम गाइड करने को तैयार है। सो प्लीज डू दैट। थैंक यू मच। मैं आपको ना एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, टू बिगिन विद संगति का असर। व्हाई आई वांट टू से शो दिस इज बिकॉज नॉर्मली लोग सोचते हैं यार कैसी भी रहो, कैसी भी जिंदगी जी लो, फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी है, यू आर ए प्रोडक्ट ऑफ एन एवरेज ऑफ 5, विच मीन दो आपके आगे, दो चार जो पीछे, 4 लोगों के साथ जो आप रहते हैं, यू बिकम लाइक दैट। So what matters is संगति किसकी करते हैं आप। This is very important. Just quickly have a look at this video. मैं थोड़ा सा आपसे इंटरेक्टिव भी रखने की कोशिश करूंगा। I want to hear you people. I want to see your chat and I want your reactions also. Whatever you like, you know, I would certainly like to do that. Look at this video and please guide me in case if you're not able to hear the audio. Please let me know. दोस्तों, Can you hear this please? बात आती है, कंपेनियनशिप की बात आती है, तो हमेशा हमारे माइंड में कंफ्यूजन रहती है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। दो तोते थे, दोनों एक ही माँ बाप को पैदा हुए, और एक तोता ऋषि मुनि का चला गया, एक तोता डाकू के पास चला गया। तो जब जब कोई भी कहीं डाकू के आसपास आता तो तोता चिल्लाता, आ गया, लूट लो लूट लो लूट लो। तो क्या होता, डाकू को पता लगता और वो लूट लेते थे, क्योंकि तोता देख पा रहा था। एक तोता जो ऋषियों की संगति में था, वो क्या करता है, जब भी कोई नजर आता है तो बोलता, आइए श्रीमान, आपका स्वागत है, आइए हमारे यहाँ भोजन कीजिएगा, हमसे बातें कीजिएगा। तो उनके यहाँ माहौल कुछ और। क्या हुआ, दोनों एक ही माँ बाप की औलाद है, दोनों ही तोते थे, दोनों के पास सेम वैल्यू, सेम कल्चर, लेकिन फर्क क्या रहा, संगति का असर। आप राजा के साथ घूमेंगे तो राजा जैसे लगेंगे, आप अगर जो चोर के साथ घूमेंगे तो चोर जैसे लगेंगे, अगर जो नेगेटिव लोगों के साथ घूमेंगे तो नेगेटिव सोचने लग जाएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो तुम बुद्ध बन जाएंगे। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप संगति किसकी लेना चाहते हैं। जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष आपका वहाँ शुरू हो गया जब आपने ऐसे लोगों को अपना दोस्त बना लिया, जो लोग आपके साथ में जिंदगी में इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि आप मधुमक्खी की तरह हैं। आप पैसा खर्च करते हैं और आप उनको खुश रखते हैं, इसलिए जब जब आप कुछ भी गलत भी काम करते हैं तो वो आपका सपोर्ट करते हैं। ये कभी आपके सामने नहीं। जिस समय छूटने का वक्त आएगा, सबसे पहले वो आपके दूर नजर आएंगे, इसलिए ये ना करें। आप संगति किसकी करें, जैसे माता पिता, वो आपकी कमियां बताते हैं तो आपको बुरा लगता है, ऐसा लगता है हमारे माता पिता हमारी इज्जत नहीं करते। आपके गुरु हैं, वो आपको हमेशा डांटते हैं, तो आपको लगता है हमारे गुरु तो बेअक्ल हैं, या आपके कोई सच्चे दोस्त हैं जो आपकी कमियां बताते, तो आपको बुरा लगता है कि यार मेरा दोस्त मेरे को कैसे कमेंट कर रहा है, कैसे मुझे कंडम कर रहा है। नो, इट इज नॉट ट्रू। ये आपके सच्चे साथी हैं, क्योंकि जिंदगी में जब तक आप जी रहे हैं, आपके साथ में कोई नहीं जाएगा, ना आपका शरीर, ना आपका मन, ना वचन, कुछ जाने वाला नहीं।
लेकिन क्या रहेगा, जो आपकी यादें रह जाएंगी, ये बताएगी कि जब लोग पीछे ये बात करेंगे, यार वो तो बहुत ही महापुरुष थे, या बहुत ही अच्छी स्त्री थी, या वो लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ वो चला गया या चली गई। आप कौन है ये सोच लीजिए। और अगर जो आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो आज के बाद चॉइस कीजिए। आपका चॉइस है कि आपको किस प्रकार के लोगों से जिंदगी जीनी है। ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ नहीं रहने वाले हैं, या ऐसी यादें, ऐसे आशीर्वाद जो जीवन भर आपके काम आने वाले हैं और पता नहीं कितने जन्मों तक आपको अच्छे फल देने वाले हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। धन्यवाद। सो आई थिंक मैंने आपको बताया कि आपको चॉइस आपके पास है संगति का। सर आई थिंक आई एम श्योर यू आर गेटिंग माय मैसेज। मुझे बताएं कि आप संगति किसकी चाहते हैं, अच्छे लोगों की? नेचुरली सबका आंसर यही रहेगा, तो मैं मान के चलता हूं। आपकी जिंदगी में आप किसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? किसी का नाम लिखना चाहे तो प्लीज चैट में डाल दीजिएगा। इट इज जस्ट अ वैलिडेशन। आपको याद तो आएगा कि ओके आई ट्रस्ट दिस पर्सन अ लॉट बिकॉज वो मेरे लिए बहुत केयर करता है या बहुत केयर करती है। इट कुड बी मदर, फादर, इट कुड बी फ्रेंड, इट कुड बी एनीबडी फॉर दैट मैटर, द गुरु और एनीबडी, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। So please feel free because as I said, I want to make it very interactive with you. मुझे नहीं और अगर जो कोई ऑडियो में चैलेंज आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, तो प्लीज फील फ्री टू टेल मी ऑल्सो बिकॉज समटाइम आई एम नॉट एबल टू सी योर चैट्स बट आई कैन प्रॉब्ली अंडरस्टैंड। चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ, कामयाब होना है? I can't hear you but I'm sure you must be getting my message. मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कामयाब होना है? Yes? Yes or no? फटाफट जल्दी बताइए मुझे, जल्दी फटाफट क्विकली चैट में बताइए। यस यस यस, परफेक्ट 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 परफेक्ट। चलिए एक काम करते हैं। या ब्यूटीफुल, आई एम गेटिंग हेमलता, अंजू, अंकित, अश्विन, राजू, स्नेहल, प्रशांत, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक। कामयाब होना है। चलो मुझे ये बताओ, कामयाब होने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या ट्रेट्स क्या होते हैं कामयाब होने के लिए? बताइए, व्हाट आर द ट्रेट्स? क्या होना चाहिए कामयाब होने के लिए? Leadership, quality, yes, honesty, determination, confidence, focus, discipline, dedication, hard work, consistency, yes, loyal, obedience, fantastic. Stick to the goal, dedication, attitude, integrity, flexible, constant, beautiful, intelligence. क्या बात है, क्या बात है, I'm loving this, beautiful. ये ना कुछ बात, this is what I wanted. चलो मेरा एक सवाल है कि आपने लिखा कि ये होना चाहिए, ये जो चीजें आप लिख रहे हैं, डू यू हैव ऑल दिस ट्रेट्स इन यू? लॉयल्टी, गुड नेचर, हार्ड वर्किंग, एजेंडा फॉर लाइफ, ब्यूटीफुल। माय क्वेश्चन इज, डू यू हैव दीज ट्रेट्स इन यू? आपके अंदर ये है क्या क्वालिटी? यस 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 यस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे। यस मुकुंद, ब्यूटीफुल। ऐश्वर्या, प्रिया, अमिन, तेजस, ब्यूटीफुल, क्या बात है। स्वाति, एवरीबॉडी, यस यस। अच्छा चलो मेरा एक सवाल है, अगर जो आपके पास एक क्वालिटी है तो सक्सेसफुल होने का रीजन भी तो कुछ होना चाहिए। क्या रीजन आपके पास सक्सेसफुल? व्हाई यू वांट टू बी सक्सेसफुल? जस्ट टेल मी क्विकली, टेल मी। गुड पर्सन, यस, टू मेक माय पेरेंट प्राउड, फोकस, यस, बिल्कुल ठीक है। हेल्प अदर्स, पैशन, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन, टू बी हैप्पी, यस यस, हैप्पी, परफेक्ट, गुड क्वालिटी, ड्रीम चेसिंग, आई एम लविंग इट, ओह माय गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल। बच्चों बिल्कुल सही जा रहे हो, loving it, ठीक है, fantastic, want to make India independent, yes, to concentration, improve my this, that, etc. यानी कि you people want to become कामयाब, उसको कामयाब होने के लिए क्या होना चाहिए आपको पता है, और कामयाब क्यों होना चाहिए ये भी आपको पता है। तो क्या आपके पास गोल्स हैं? क्या do you have goals to be, we want to be successful? Successful की परिभाषा is कि anybody can call themselves successful, but you should have a goal. Do you all have a goal? You have, Prashant? Yes yes, you all have goal. All right, okay, fine, बहुत अच्छे। Yes, Anita, yes, Devinder, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुषमा, yes yes, Sunil, go ahead, fantastic. You have goal. Now have you started working on your goal is my question. आपने अपने गोल पे काम करना शुरू कर दिया क्या? Yes yes yes, perfect, not yet ready, ठीक है, your work not yet, yes yes, बहुत अच्छा। Be honest, be very honest. If you're not working perfectly, all right, you can certainly write this, all right, बहुत अच्छे। Now let me do one thing, I'll do one thing. I have this envelope, I'm sure you can see this envelope, all right, and I'm putting
I'm having my purse. इस पर्स में पैसे हैं. I'm putting 10,000 rupees in this particular envelope right now. ठीक है ना? डाले नहीं है लेकिन दिखा रहा हूं आपको. All right. Now I want any of you to send this envelope to the place that it deserves to be there. Who wants to take it? Quickly बता. कौन बता रहा? धीरज कह रहा, not visible. अच्छा, me. Yes, मयंक वाडेकर बता रहा, ठीक है. नीतू ने कहा मैं do Francis, yeah, me. You want to take it? You want to send it to the place that it deserves to go? Me. NGO, अच्छा, NGO, yeah, I'll send it to charity, this, that, etc. Me, ये वो, yeah, fantastic. Yes, it's me. Perfect. To the mother, to charity, dog shelter, ठीक है. Not visible. Rani, I'm not visible or what? Needy people, yes. Privileged children, NGO, etc. Indian Army, fantastic. What you are saying is, you want to send it to something that is close to your heart, because you said Ukraine. Chalo, somebody mentioned Ukraine. Somebody may want to send it to charity. Then Guru Dakshina, bahut achhe. You all have different goals, but I said send it to the place that it deserves to be there. Army, yeah, video not clear. Video was not very clear. Tatavarti Ashish, you said, I'm so sorry. Is it? Acha, to my mother, Sarah ne kiya. Acha, video is clear. All right, video is very clear. Thank you. Probably sometime you may have network issue also. So I said, I want this envelope to be there where it deserves to go, not at the place that you want it to go. आप तो अपनी मर्जी से बता रहे हैं कि मैं चैरिटी में दूंगा, यूक्रेन दूंगा, whatever, Indian Army, etc. But I said, where should it go? For needy people or sister company. All right. मैं आपको बता दूं दोस्तों, investments deserve, yeah, to my goal. You know what is happening interestingly? Yeah. All right, family. Now what is happening interestingly is that none of Guptan, Ashwini ne likha, none of you have actually seen that there is no address on this. जिस प्रकार से ये एनवलप बिना एड्रेस के कहीं नहीं जा सकता, जितने मेरे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं जिनके पास गोल्स नहीं है, वो कहीं नहीं जा सकते. You cannot go anywhere. You are where you are. It means that this envelope needs to have address. Same way, you need to have your goals in the life to actually become successful. That is where success will drive you to. Because if you don't have goal, it is like this barren letter. It will not go anywhere. Because if you just write address, it will go wherever it need to go. That's it. We just need address. Same way you need goal in the life. And if you don't have goal, you will be just like this letter. So in case if you have not set your goals, please set your goals. And goals, एक बार बता दूं दोस्तों, सपने ना गरीबों वाले नहीं लेने हैं. ऑनरेबल पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है. और सपने लेने तो अमीरों वाले सपने क्यों ना लें? Why don't you plan कि भी यार मुझे तो बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे जेट प्लेन चाहिए, मुझे तो वो चाहिए. Yes, take big dreams. मैं जब गरीब था and I had no money even to eat food, तो मेरे को तो सोचना ही नहीं चाहिए था. मैं तो ना उम्मीद होकर के मर जाना चाहिए था, मुझे नौकरी करनी चाहिए थी. But I did not do that. I said no, I will set my goal. And my goal was कि पूरे साल में मेरा फैमिली 1 लाख रुपए साल का कमा लेना, तो I'll be very happy. आपने किसी ने लिखा BMW, fantastic. मैं कहता हूँ BMW, any aspiration. And don't you think जो लोग aspiration कर रहे हैं उनके पूरे हो रहे हैं? हाँ, तो जब एस्पिरेशन करनी ही है तो अच्छी क्यों ना करें, लेकिन उसके लिए गोल होना चाहिए. तो इसलिए गोल अगर जो आपके पास नहीं है तो प्लीज सेट अप दिस गोल, अदरवाइज यू विल नॉट रीच एनीवेयर. जब आप गोल सेट करें, फॉर एग्जांपल आपने गोल सेट किया मुझे 10 किलोमीटर वॉक करना है, तो आप सुबह से उठ के शुरू नहीं कर देंगे. यानी कि यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ कि यस आई वांट टू गो स्टेप बाय स्टेप, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, मे बी 10 days, 20 days, 1 month, 2 months, 3 months. Then you'll start walking 10 kilometers as if nothing happened. This is how when you set your goal, then you start working towards it slowly, and it will really help. So please start doing that. Okay. अच्छा चलिए, मेरा एक सवाल है. How many letters are there in the alphabet? सबको पता है? तो बस I'm asking a very small, बच्चों से सवाल पूछ रहा हूँ. 26. Fantastic. Beautiful. Everybody knows. Beautiful. चलिए, मुझे बताइए, how many books are there in the universe? पूरे यूनिवर्स में कितनी किताबें होंगी?
Huh? Unlimited, infinite. Infinite. Beautiful, beautiful. Absolutely. Unlimited, infinite, billions, trillions. Yes, you don't know. Infinite. जैसे कितने तारे हैं, इसी प्रकार से uncountable. We don't know. So, and one book. हम बुक मान के चलते, एक बुक की कॉस्ट कितनी, एक एवरेज 1000 रुपए ले लें, 500 रुपए, 200, 400 रुपए में आ जाती, बट लेट्स से 1000 rupees will take it as, but just imagine what is the knowledge, benefit of the knowledge of the book. What is that value? If the cost of book is 1000, what is the benefit? Infinite, lifetime, infinite, unaccountable, priceless. Yes. No value, no, absolutely, priceless. True. Anusha, I'm loving, Bhumika, everybody, whatever you're saying, no value, priceless. Yes, this is the reality. For you, every book that you're getting is going to add so much of infinite value to you for the lifetime. जो चीज आपने सीख लिया कभी भूलता नहीं है, आपको 2, 3, 4 साल की उम्र की छोटी बातें भी याद होंगी until lifetime. 61 years का आदमी आपसे बात कर रहा है with a 45 years of experience and 20-year-old person's energy. I read a lot. Well, I must be reading. I must be having lots of titles. I must have read thousands of books, and I'm always on the learning curve. So you people should be learning as much as being taught, not only by professors and teachers, but please do self-learning also on the basis of your goals. आपका goal है, आपको पाने हैं, तो उसके ऊपर काम करना जरूरी है. आपको उसको please करना शुरू कीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, एक आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ. Why does it take so much time, to sort of, let's say, to realize the benefit of education? You must be always thinking, यार क्या हो गया यार, बचपन से पढ़ते नर्सरी से कहाँ तक आ गए, and पढ़ाई जा रहे हैं. मैं आपको ब्यूटीफुल एक बैम्बू की स्टोरी दिखाता हूँ. And the beauty about that bamboo story is that जैसे आपने, let's say you've been studying yourself all throughout your lifetime, whatever age you are today, you're still studying, and you will continue to study, not only study in terms of the curriculum, but in terms of the life study also that you'll be doing as a society. जब आप society में जाएंगे ना, it will be very different study altogether. What you learned will not actually be, let's say, that will not be practiced. That will be useful for you, but what will be practiced will be very different. So it will be different learning altogether. So why does it take so much for an education to take so much time? Let me show you a beautiful video on that. Okay, एक Chinese bamboo की story दिखाता हूँ. Just look at this.
So as you can see from this beautiful video, the message is very clear. I'm sure अगर जो मेरे सामने आप बैठे होते तो मैं आपसे सवाल पूछता, but nevertheless, I'm sure आपको लगता होगा ना कभी भी जिंदगी में इतनी पढ़ाई कर ली इसका फायदा क्या है? ऐसी है जैसे 5 साल तक बैम्बू को आप वाटर कर रहे हैं and it is not growing, it's just not showing up, but suddenly in 6 weeks flat, it rises 90 feet like a phoenix. 5 साल पता क्या कर रहा था वो अपने जड़ें मजबूत कर रहा था, जैसे आज आप लोग कर रहे हैं. आप अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं DY पाटिल इंस्टीट्यूट के साथ में, माता पिता के सानिध्य में, और दिल्ली सारी लर्निंग कर रहे हैं. क्यों? पता है जिस दिन आप मार्केट में लॉन्च होंगे ना तो लोग आपसे ऐसे ऐसे सवाल करेंगे, आपकी खाल खींच देंगे. You will be so lost. You will say, "Oh my God, I never prepared myself." So you should not be naive. आपको कोमल नहीं बनना है, आपको स्ट्रांग बनना है. You said, "Yes, come fight with me. I am ready for any challenge because I'm totally prepared. I've prepared myself for so many years. 20 years मैंने अपनी तैयारी की है, and now I'm ready to launch. मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका करने की ताकत रखता हूँ." That should be your aim, and for that, this learning process that you're going through is so valuable, so immense. मैं बता दूं दोस्तों, जिंदगी में कभी आप सोचेंगे कि मैं बाद में पढ़ाई कर लूं, ये कर लूं, you can't do it. So it's right time now for you to focus on that and work as hard as possible, learn as much as possible. Please do that. अच्छा चलिए मैं पुनः चाहता हूं, कितने लोग मानते हैं कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस इन अ लाइफ टाइम? जस्ट से यस और नो, यस और नो, फटाफट जल्दी बताइए. कमांड क्विक चैट में डालिए. अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस इन अ लाइफ टाइम. यस नो, यस नो, यस नो. ऑलराइट, लोग पीपल आर सेइंग यस और नो, यस और नो. ठीक है. ऑलराइट, देयर आर सम नो, some yes, some yes. ऑलराइट. Now that's a very interesting thing. Actually, we are always surrounded by the opportunity that is going around in the mind. This is the biggest lie of the life. हमेशा आपको जब भी कहा गया है वो झूठ कहा गया कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस इन अ लाइफ टाइम. नो, आई एम सो सॉरी. जब आप मेरी बात अभी सुन रहे हैं, यू आर एक्चुअली थिंकिंग इन द बैक ऑफ माइंड, अरे मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, आई शुड डू दैट इन दिस एंड दैट. दीज आर द अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर नॉकिंग योर डोर्स एवरी मोमेंट. दे डोंट जस्ट नॉक वंस इन अ लाइफ टाइम. यू आर फिल्ड विद अपॉर्चुनिटीज. जैसे आज आप, यू आर फिल्ड विद एयर ऑल अराउंड. Can you feel the air? But you're breathing in and out. You're alive just because of that. Same way, opportunity exists every then and now. But we always think somebody will offer us an opportunity in a platter. ऐसा कभी हुआ है क्या? It will never happen. You have to spot all the difficulties that you see in the life are an opportunity. For a lot of people, it's a challenge, and they get caught down. They वो डर जाते हैं, थक जाते हैं, गिर जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं. But those who are strong enough will say, all right, I can solve this problem. ऐसा होता है ना, आप बोलते हैं, अरे बता प्रॉब्लम क्या, बता. चलो, always आप लोग बोलते हैं. तो when you say, अच्छा प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन तो ये है यार, that is an opportunity. That is a solution that you gave. That is an opportunity. So they same way life may, you are surrounded by opportunities. So never ever think that there is no opportunity. My question is, who are you? Let's say we are all individual. We are all having names. But I just like to know your identity. Who are you? Anybody wants to put in the chat? I think my chat might be disabled at this point. So I can't see chat now. So how does it help me? So I can actually help you with the chat. So we have Saira who says that I'm a good human being. What do you see yourself? I'm a stock trader. All right. I can see that I'm an Indian. So we have Nikhil and Nikat who says that I'm the future manager, an individual. Okay. I'd like to, since certain things are not visible, and I'm checking this chat from you, sir, but I'd like to sort of take it forward very quickly. What I'd like to tell friends, all of you, is you all have some other kind of special trait. कुछ ना कुछ तो खास बात है. जैसे लेट अस से आप, यू आर अ वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन, यू आर अ वेरी लर्नेड पर्सन, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, यू आर वेरी इमोशनल, और लेट से you are too good at music, or too good at cricket, or whatever the case may be. Everybody, all of you have something other than very different. For example, Sushi Aggarwal, I'm a marketing man, I'm a motivator. So my name would be
motivator, Sushil Aggarwal, or a marketing man, Sushil Aggarwal. That means when I say, who are you? You know, all of you have your own names. And do you know that similar names exist? Not only for you, but for everybody for that matter. There may be n number of people with the same name. So how do we identify you? आज हम अगर जो किसी को identify, कोई अनिल को identify करना चाहते हैं, तो there may be 10 Anils. But which Anil? If in case some Anil is writing that, you know, you can trust me, so I can, he can write trustworthy Anil. You know, so that means when I say your identity is not your name. Your name is only been given to you, but your true identity is your personality. जो आप हैं और जो आप जीवन में हमेशा लोग आपको बोलते हैं ना, अरे तो बड़ा मेहनती आदमी है, बड़ा हिम्मत वाला है यार, बड़ा एकदम स्टूडियस है, बड़ा ईमानदार है. Why do they say that? They don't say कि यार बड़ा मेहनती भी है, बड़ा तूफानी भी है, बड़ा ये भी है, बड़ा वो भी है. But they normally say one thing, which is your identity. So that is your true identity. And let me tell you, friends, all of you have to become your own brand. अगर जो आज आप लोग कहीं किसी से मिलते हैं, the way you talk, the way you behave. For example, let's say I'm sitting right now with you in this suit itself. Why should I be doing that? You know, it's a hot summer in Delhi, so I can be actually doing the other way around. But it's okay. I have an ambience, great ambience here, and I'm addressing and talking to all of you. If I don't make myself presentable, then how will I sell? So I think, you know, all of you, for that matter, should make yourself look like a brand. And if that being the case, your brand is your identity in terms of being a trustworthy person or a knowledgeable person or something, you know, which you can be counted upon. And that is something that you should work for a lifetime in your life. जैसे मैं हूँ, I motivate and I'm a marketing man. I can sell. I'm good at selling. So if that be the case, you know, I normally pick up that job where I have to do marketing and various other things, because that is where my skill set lies. That is where my confidence lies. So आज आप लोग जो भी कर रहे हैं ना, you should identify what is your strength. That biggest strength is your brand, and the biggest strength is your identity. So you should now prefix your name. Yes, marketer Sushil Aggarwal. Yeah, let's say motivator Professor Suhail, like that. So this is something that, you know, you have to really look into. अच्छा चलिए काम करते हैं. If you ask the questions, I will give you medals. Medal तो मैं नहीं दे पाऊंगा, but I'll give you certificates. Okay? How many of you are interested in actually asking questions? Please raise your hand quickly. ये अपने yes जो भी डालना chat में डाल सकते हैं आप. Anybody wants to ask questions, so that, you know, I will certainly give you time. I'm still not closed, but, you know, in case if you're interested. So I'm assuming कि भी आप लोगों ने सवाल उठाया होगा या पूछा होगा. So what I want to communicate here is, my message to you would be that you have to actually sell yourself first. अपने आप को बेचना है. The way I sold myself right now, by saying that, you know, I'll give you a medal or I'll give you a certificate and all the thing. In the life, you have to become not only presentable, but, you know, unless otherwise you take the audience mind space and you make them understand and you make them connected, it will just not work. And if that being the case, the first art of selling and the first lesson of marketing is sell yourself. If you can sell yourself, I can assure you, friends, you'll be successful. You walk into a meeting and let's say you are beautifully dressed, you know how to talk. You'll say, hi, good morning. My name is Sushil Aggarwal. I'm chairman of Avro India Limited. How are you, sir? How are you today? And, you know, I'd like to introduce myself. I'd like to know a little bit about yourself. Can we just do that, please, for a moment? So what happens when you sell yourself, other people buy it. Then they believe, यार इसमें कुछ खास बात तो है, इसकी बात सुनते हैं. Let us see what he is, who he is. Same way, if you're not presentable and if you're not able to sell yourself, then other person will ignore and probably will walk away. That is not a great thing. And we always think कि यार लोग हमको ignore करते हैं, लोग हमारी सुनते नहीं है. It is not that. It is just because, you know, we are not able to impress the other person. So it's very important for all of you today to learn this lesson of selling yourself as being the first lesson of marketing. And if you can do that in your lifetime, so I can assure you, you will be very, very different. एक छोटी सी वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ. I hope, you know, audio is visible. I want to check your observation power. All right. So I'll quickly run this video. Please see, there are 21 changes that are being made in this video. It's a small video of about a minute, but I'll show you that there are 21 changes are there. I would like to hear from my children कि उन्होंने कितने changes देखे. Please look at this video.
Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's clothes below stairs. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. It's just a matter of observation. The real question is how observant were you? There are 21 changes. Now just see the 21 changes, because I don't know how many changes you've seen, but see what is happening. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. It's easy to miss something that you're not looking for. The message is very loud and clear. Message to all of you is that, when professors are teaching you, normally what happens, we are a little busy, preoccupied with certain things which we should not have been doing. And we always think, yeah, हमें समझ में आ गया. कभी नहीं समझ में आएगा. Just this small video that I showed you, there are 21 changes. I could have asked question to you, but I sort of I have shown you the entire video myself. I would have asked question, कितने लोगों ने कितने changes देखे? Can you just see that small quick changes are done, but I'm absolutely confident that 21 changes कोई भी identify नहीं कर पाया होगा. यानी कि what I want to my message to all of you is that in the life, if you're not careful, if you're not very smart, and if you do not have an eye for a detail, you'll miss out a lot. Never ever think that everything written in bold and it is written in explicit. It is not explicit, it is implicit. यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि लाइफ में challenges कौन से कैसे क्या है, उसको fine read करना पड़ेगा, and you have to keep a watch over these things. And if you don't do that, you are going to miss out a lot, and you'll say, यार समझ नहीं आया कुछ कहाँ मिस कैसे क्या हो गया. All right, इसमें whom do you want to be? You want to be this left one, a single leaf, or you want to be tree? What do you want to be? Chat में डाल सकते हैं आप. All right, tree. Beautiful. Yeah, I can see that. What is happening? If you want to be a tree, it is as good as saying this: job. Somebody who's seeking a job versus an entrepreneur. And this is what happens to you in the life. A job. You start with a job as a young man, and you end up here. I'm not saying all jobs are bad. Don't take me otherwise. Job to आपको करना ही करना है. For 3-4 years at least, you must go for a job, because you'll be taught a lot of discipline. Otherwise, you can't learn that in the confines and domains of your own family. It's okay, but job should not be only your only priority. All right. अभी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ. Entrepreneur कौन होता है? Look at this video, and I'm sure it'll actually thrill you a lot. एंटरप्रेन्योर होने का मतलब क्या होता है? आज देश में जहाँ स्टार्टअप, ई-कॉमर्स, हाइपर लोकल और यूट्यूब जैसी चीज़ें बूम पर हैं, तो अपने फेलियर्स के लिए घर वालों को ब्लेम कर रहा है. अपने फेलियर्स के लिए घर वालों को ब्लेम कर रहा है. हर दूसरा इंसान आज खुद को एक एंटरप्रेन्योर क्लेम कर रहा है. लेकिन कौन होता है एक सच्चा एंटरप्रेन्योर? कभी सोचा है यार? एक एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो अपने 5 साल प्लान कर रहा होता है जब बाकी लोग अपने वीकेंड्स प्लान करते हैं. एक एंटरप्रेन्योर की जिद होती है कामयाबी. एक एंटरप्रेन्योर की मजबूरी होती है कामयाबी. एक एंटरप्रेन्योर का नशा होती है कामयाबी. एक एंटरप्रेन्योर के जहन में बस एक ही बात होती है, दैट आई विल बी सक्सेसफुल, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली. उसको जलना पड़ता है, उसको लड़ना पड़ता है. जिसके बारे में सोच के लोगों की फट जाती है, उसको हर वो काम करना पड़ता है.
उस चीज़ को रियलिटी बनाना होगा जो बाकी लोग सुन के ही कहेंगे साला ये तो हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। उस टाइम वो बोलेगा दैट आई एम पॉसिबल। अपने अंदर वो जज्बा लेके आओ, वो बार बार गिर के उठने का जज्बा, वो जुनून कि जब वजूद के मिटने पे आए बात तो दिखा सको दुनिया को अपनी औकात। क्योंकि जिसके सर पर होता है उसका हाथ, किस्मत भी हो लेती है उसके साथ। वो या तो जीत जाएगा या कुछ नया सीख जाएगा। ज़िंदगी में बस यही दो चीज़ें तो होती हैं यार। एक एंटरप्रेन्योर को ये बात पता होती है कि उसके इरादों का कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, उसके इरादों का कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। वो कुछ नया सीख जाए लेकिन कभी हार नहीं सकता क्योंकि जिस टाइम उसको लगा कि वो हार चुका है, गेम ओवर, वो एक्शन लेगा जब दुनिया सोचती रहेगी। वो कामयाब बनेगा, दुनिया बस बाल नोचती रहेगी। वो कुछ बड़ा सोचने की ज़रूरत करेगा जब बाकी लोग 9 to 7 जॉब के जाल में फंसे रहेंगे। वो सैक्रिफाइस करेगा जब दुनिया EMI पे iPhone 7 लेने का प्लान करेगी। वो बिना सैलरी के, बिना रुके काम करेगा जब दुनिया सेविंग कर करके अपनी EMIs भरेगी। वो अपने कंपटीशन को एनालाइज करेगा जब दुनिया टिंडर पे राइट स्वाइप करेगी। वो अपना बिजनेस प्लान लिखेगा जब दुनिया बाबू आई लव यू अपने फ़ोन पे टाइप करेगी। वो अपनी किस्मत का राजा होगा, अपने विज़न का गुलाम होगा। दुनिया उसको देख के मोटिवेट होगी क्योंकि एक दिन उसका भी नाम होगा। बोलता उसका काम होगा, सबकी ज़ुबान पे बस सलाम होगा। लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर होगी उसके पास, हर एक ऐशो आराम का इंतज़ाम होगा। जी फॉर गर्लफ्रेंड नहीं, जी फॉर गोल्स होगी उसकी प्रायोरिटी। हमेशा भूखा, कभी सेटिस्फाई ना होने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए कभी नहीं रुकेगा। वो क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी को फ्यूल बना के यूज़ करेगा अपने अगले टारगेट्स की गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। अच्छे वक्त में विनम्र, दुनिया को बदलने के लिए बेसब्र। सचिन बंसल, कुणाल बहल, विजय शेखर शर्मा, रितेश अग्रवाल, भावेश अग्रवाल, इन सबको पता था कि साला एक दिन किस्मत चमकेगी यार, और जब चमकेगी तो सबके तोते उड़ जाएंगे। ये कार देख रहे हो, ये है मेरी ड्रीम कार। आजकल जब लोग 4-5 लाख रुपए की वैगनआर में बैठ के खुद पे अभिमान करने लगते हैं ना, और रिक्शे वालों और ऑटो वालों के सामने धौंस जमाते हैं, इस गाड़ी की कीमत 5 करोड़ है। और मुझे कॉन्फिडेंस है दैट वेरी सून आई एम गोना ओन दिस कार, आई एम गोना ड्राइव दिस कार। लोग बातें करते हैं, मैं करके दिखाऊंगा। दिल्ली की सड़कों पे इस गाड़ी को दौड़ाऊंगा क्योंकि देखे थे जो सपने, आज उनके करीब हूँ। खुद ही बनाया मैंने, वैसा नसीब हूँ। सबने कहा इम्पॉसिबल है यार, सोच लिया मैंने, अब मैं हूँ तैयार। लोग क्या कहेंगे, कपूर साहब क्या सोचेंगे, देख के जुनून मेरा अपने बाल नोचेंगे। बनूंगा कामयाब, हम मन में विश्वास है। आलस से हूँ दूर, बस जीतने की प्यास है। कुछ आस है ये खास है, बस जीतने की प्यास है। अब मन में ना गुरूर है, ईगो भी कोसों दूर है। हेटर्स मेरे सारे जलने पे मजबूर है। अब मैं क्या करूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है। बस स्लो नहीं होना मुझे, मंजिल थोड़ी दूर है। जी हाँ दोस्तों, मंजिल थोड़ी सी दूर है, और सिर्फ खुद के लिए नहीं, सबकी हेल्प करो यार। क्योंकि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी तो अपना इंडिया ग्रेट बनेगा ना, क्योंकि हम यूथ्स में ही वो ताकत है। So friends, ये आप लोगों के लिए है this beautiful video. What an entrepreneur is supposed to be. कैसी लगी बताइए जल्दी, फटाफट बताइए। Did you like it? हाँ, entrepreneur क्या होता है? Because क्या होता है ना, we always dream and think कि entrepreneur, being chairman, for example, at my stage today, being chairman is not an easy job. It also comes with a lot of responsibility. Entrepreneur किस दौर से गुजरता है और क्या बनना पड़ता है। तो I wanted to give this message to all of you, क्योंकि आपको तैयारी करनी है। अभी तक आपने ड्रीम्स देखे हैं, आपने देखा फर्स्ट क्लास वाइस प्रेसिडेंट का एक पोजीशन, ब्यूटीफुल एक ऑफिस, एक सेक्रेटरी एंड ऑल द थिंग, बट लाइफ इज नॉट दैट इजी एंड इट्स नॉट दैट काइंड। You have to go through the challenges, and I want you people to get prepared. मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं आपको सपने ऐसे दिखाऊं जो आपको लगे अरे सर ने तो ऐसे बोला था, ऐसा तो है ही नहीं जिंदगी में। यहाँ तो लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, दे स्ट्रिप यू डाउन, इतना आप लोगों को दुखी कर देंगे या इतना आपको एक परेशान हो जाएंगे, आप सोचेंगे यार माय गॉड, आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर दिस। दैट इज व्हाट आई वांट यू टू डू। आई वांट टू प्रिपेयर यू पीपल फॉर दैट, कि कोई बात नहीं, कभी भी आए तो बोलो यस वी आर रेडी टू फेस, बिकॉज वी नो ऑल दिस थिंग विल हैपन टू अस एंड वी आर फुली रेडी एंड विल टेक इट फॉरवर्ड। ओके, चलिए कितने लोग जिंदगी में यहाँ पर ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में फेल हुए, जल्दी बताइए फटाफट। हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू फेल्ड? कम ऑन जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, चैट में बताइए कौन कौन लोग फेल हुए हैं और हाउ मेनी टाइम्स यू हैव फेल्ड इन द लाइफ।
बता रहे हैं? यस, मी, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे, फैंटास्टिक। अगर जो फेल हो रहे हैं तो यू आर नॉट फेलिंग, यू आर ट्राइंग एंड यू आर लर्निंग एंड यू आर एक्चुअली ग्रोइंग। आप कामयाब हो रहे हैं। ओके, थोड़ा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक, आई थिंक समवेयर नॉट लर्न अ लेसन का कुछ गलती कर दिया शायद किसी ने। एनीवे, सो आई वांट टू टेल यू फ्रेंड्स कि यू नो एक्चुअली यू आर नॉट फेलिंग, you are learning and you are moving towards becoming successful. So that means you should not plan to succeed but plan to fail, because when you plan to fail you have nothing to lose. You'll say ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो फेल होने के लिए तैयारी कर ही रखी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, सक्सेसफुल हो गया, वाह मजा आ गया यार, क्या बात है। बट इफ यू थिंक नहीं मुझे तो सक्सेसफुल होना है, वो एंजाइटी आपको जीने नहीं देगी, आपको मरने भी नहीं देगी और आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। आप हमेशा डरे रहेंगे क्योंकि आपको सक्सेसफुल होना है। जब आप बोल रहे फेल हो गया, अरे क्या फर्क पड़ता है यार, फेल तो अभी हो जाएंगे, क्या तकलीफ है। When you plan to fail, you will actually succeed. So never think of succeeding, but plan to fail. Okay? Fear has two meanings: forget everything and run, or face everything and rise. Choice is yours, isn't it? We can always be fearful, and I'm sure हम लोग हमेशा सोचते हैं ये चला जाएगा, वो चला। डर हमें जीने नहीं देता, और मैं फिर कहता हूँ डर हमें मरने भी नहीं देता। तो डरना नहीं है किसी चीज से, जो चला गया तो कोई बात नहीं, इससे क्या हो गया, सिस्टम नहीं दे सकता क्या? वी कैन। अभी मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं, ये आप लोगों के लिए है, curated words है, दिस इज इन हिंदी ऑफ कोर्स विद अ सॉन्ग, बैकग्राउंड सॉन्ग है, एंड आई वांट यू पीपल टू लुक एट दैट। वो जो उस पे लिखे ना, जो मैंने स्लोगन लिखे हैं, डायलॉग लिखे हैं, उनको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वो आपके लिए बनाए गए हैं। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तू भी बन सकता है सिकंदर, हो तू भी बन सकता है सिकंदर। ओ सिकंदर, सिकंदर हो सिकंदर। झांक ले दिल के अंदर। हो सिकंदर, सिकंदर हो सिकंदर। झांक ले दिल के अंदर। हे हे, रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब। हंसता हुआ जो जाएगा वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। आ देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। आ देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। होंगी कामयाब, होंगी कामयाब, हम होंगी कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगी कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। कितने लोग अपने आप को सोचते हैं कि हमें कामयाब होना है, वो तो कह ही चुके हैं। कितने लोग अपने आप को पागल मानते हैं कि आई एम मैड। कितने लोग बोलते हैं कि यस मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। यस 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 यस,
ग्रेट प्रियंका, मोनिका, तुम स्वाति, सागर, ब्रिलियंट। आप मान के चलेगा जो लोग अपने आप को मैड समझ रहे हैं, आप मान के चलिएगा क्या आप प्रगति की तरफ जा रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। यू नो व्हाट, जब भी आप कुछ नया करते लोग बोलते हैं तू पागल है क्या? यस, पागल ही कर सकता है। सेन होता तो सोचता रहता कि भैया करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। और ये पागलों का जुनून जो होता है ना, जुनून इज कॉल्ड एज पागलपना। ओके, और जिसपे वो है वही कामयाब हो सकता है। चलिए, मुझे जानना है इसमें से आप कैसे बनना चाहते हैं। लेट अस से ये या ये, लेफ्ट वाला या राइट वाला, व्हाट डू यू वांट टू बी, whom do you want to be? ओके, राइट वाला, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे, राइट वाला। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको भाविश अग्रवाल या राइट वाला बनने के लिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि भाविश की बात कर रहा हूं, एनीबॉडी, राइट वाला बनने के लिए सबसे पहले आपको लेफ्ट से गुजरना पड़ेगा। You have to be beaten down many number of times. You will be bruised, you will be abused, you will be accused. आपका इम्तिहान हर समय, हर दरवाजे पे, हर जगह लिया जाएगा। इतना पीटा जाएगा कि आप बोलेंगे ये हमारे साथ क्या हो गया जिंदगी में, हम तो माता पिता के गुरु के साये में जी रहे थे, क्या जिंदगी थी यार, अरे वाह क्या मजे आ रहे थे, वी आर हैविंग ग्रेट टाइम फ्रेंड्स एंड ऑल द थिंग। वी नेवर रियलाइज कि 10,000 रुपए की जॉब के लिए हमसे लोग ऐसे सवाल करते हैं और ऐसे हमारे को डांटते हैं, ऐसे हमारे को यूज करते हैं। You have to, if in case you want to become bhavish or you want to become successful, then first get prepared. ये जो जितनी भी चोटें लगी हुई ना, ये लगने वाली हैं। So if you're not prepared, you will not be able to reach where you want to be. All right, this is very important. चलिए, इस आदमी में ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है? What does he has that we don't have? बताइए, जल्दी बताइए, चैट में डालिए फटाफट। Consistency, creative, success, nothing special, perseverance, daring, madness, dedication, vision, real persistence, success, beautiful, बहुत अच्छे। अगर जो आप लोग सबके सब मानते हैं, Elon Musk, I'm sure you are all aware of कि he was not a filthy rich man. He has been sleeping in his couches and all that. सुना होगा आप लोगों ने, PayPal शुरू किया था, साउथ अफ्रीका से आया था, PhD करना चाहता था, he dropped out, he could not do that, and today he is world's one of the most successful, daring entrepreneur. I had never ever seen something like him in life. क्योंकि आज वो नासा से लेकर के और क्या क्या चैलेंज नहीं कर रहा है, माय गॉड, हाइपरलूप टू लिथियम बैटरी टू टेस्ला टू सो ऑन सो फॉर्थ, ही इज जस्ट अनस्टॉपेबल। So the point is, जो भी आप लोगों ने लिखा that he has this perseverance, quality, etc., consistency, you all have that. It is just that we haven't woken up. हम पता क्या सोचते हैं, नहीं यार, पहली बात तो मेरे पास सपने नहीं है, गोल नहीं है, मेरे पास सपने नहीं है, अरमान नहीं है, और अरमान में तो छोटे लेंगे, मोटरसाइकिल ले लेंगे, साइकिल ले लेंगे, ऐसे अरमान। Why we should not think big and why we should not dream big? एंड उसके बाद ना उम्मीद, हम लोग हमेशा सोचते हैं नहीं यार ये तो थोड़ी होता है, या तो हो ही नहीं सकता यार, रियली। तो अगर जो पेपाल, इसने एलन मस्क ने ये बात सोची होती तो कभी नहीं जा पाता। इसी प्रकार से आप बिल गेट्स से लेके किसी का भी उठा लीजिएगा, इतिहास किस प्रकार से, everybody were as ordinary and as special as you are. You are as powerful and as capable as Elon Musk is, or Warren Buffett is, or Mukesh Ambani is, or anybody for that matter. Only thing is आपको अपने अंदर की, आपने कॉलिंग, अपना जो ब्रांड है ना, उसको कॉल करना है कि yes, I am powerful and I'm God's biggest creation and the gift of the God. And your mother, father created you. Gurus are there. World class institute is guiding you. Wow, क्या चाहिए आपको? और इतना अच्छा देश हमारा, आज हमारे को मौका मिल रहा है, 140 करोड़ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लोगों को सर्व करने का मौका मिल रहा है. So please get prepared for that. Okay? चलिए मैं पूछता हूँ, आप लोग सारे अपने आप को स्मार्ट तो मानते ही हैं, and I'm sure मेरे सारे बच्चे स्मार्ट ही है, तो मैं I'm absolutely very clear. चलिए, आप लोग आइकॉन है क्या कोई? Are you an icon? Let's say you are something who people should be looking at. Or are you a great leader? Anybody wants to say yes? You can go on, put in the chat, no problem. मैं chat नहीं देख रहा हूँ, but I'm assuming that you are all writing that. There are a couple of them you're writing, but couple of them are not just writing. Do that यार. एक बार बताऊँ, ये I wanted to make, मैंने तो साफिया मैम से रिक्वेस्ट किया है कि अब तो ना कोविड जा चुका है. I will come to DY Patil
I will stay there till the time that you want me to, and I will do a physical session, interacting, discussing a lot of these things, and बहुत मस्ती करेंगे. आपको मैं बता दूं, I always have a great fun, so I'll do that. This is my commitment to all of you. But in the meantime, मैं फिर भी आपसे कुछ छोटे-मोटे सवाल Q&A की इस प्रकार से पूछ रहा हूँ कि I want to make it very interactive with you. कि अभी आपने क्या कोई नए benchmark, नए मानक सेट करे हैं क्या? Are you compassionate? क्या आपके दिल में लोगों के प्रति उदारता है क्या? हाँ, ऐसा है. I'm sure you must be writing it. Yeah, I can see chats are coming in. Yes. बहुत अच्छे. दीक्षा, तृप्ति, मोनिका, तुलिका, बहुत अच्छे. Brilliant. Go on writing. बिल्कुल ठीक है. बहुत अच्छे. You're compassionate. All right. अगर जो ये सब नहीं है हमारे पास, तो there's nothing like success quotient. You know, success is when people, लोग ना आपके सामने उनकी आंखें झुक जाएं, आपके लिए उनका सर उठे तो कहता सदके में उठे, आपकी इज्जत प्यार के लिए उठे, उनके आंखों में आपके प्रति सोच करके आंसू निकल जाए. That is success. Just money is not a success. Money is a byproduct of success. Okay. So if you want to be successful, then you should do that. और अब इसके लिए मैं एक छोटा सा ना गाना सुनाऊंगा आप लोगों को. हाँ, और इस गाने को साथ में भी गा सकते हैं हम लोग. मैं आपको जस्ट प्ले करके दिखाता हूँ. देखिए. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. लोग सोचते हैं ना, यार मैं खुश हो लूं, उसमें कौन सी बड़ी बात है. लेकिन किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, कहता है जान दे दे किसी की मुस्कुराहटों के लिए. किसी के पास दर्द हो तो उसको उधार ले ले, भैया मुझे दे दे, कोई बात नहीं. और किसी के लिए दिल में प्यार हो, जीना इसी का नाम है. दोस्तों, जीना वो नहीं है जो सिर्फ हम अपने लिए जीते हैं, वो तो जानवर भी करता है. हमें प्रकृति ने मौका दिया है सबके लिए जीने के लिए, प्रकृति समाज के लिए जीने के लिए, वो हमें करना है. आप लोगों को जिंदगी में जब भी जीना है ना, तो टीम काम करना है. एज ए टीम. व्हाट इज दैट? मैक. व्हाट इज मैक? मैक इज motivate, appreciate, and collaborate. I'll show you a beautiful small video. I'm sure मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा म्यूजिकल टाइप का बना के चल रहा हूँ, because I wanted to keep it little live type, you know, where you can love that, you know. Otherwise monologue बात करते करते इंसान बोर हो जाता है, यार पता नहीं क्या बोल रहे, सोल सर बोल रहे हैं. So I'm giving this small anecdotes in between, छोटे-छोटे मैं snippets ऐड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए. I'll show you a beautiful video. Just look at this video कि how you should be collaborating as a team. Do you see the power of collaboration? कि आज वो खुद खाना चाहते तो नहीं खा सकते, लेकिन सबके साथ मिलजुल के एक दूसरे को जिंदा कर दिया. This is exactly how to do the life. If you got a learning, say yes or no, whatever you like to. आपको कैसा लगा? Just write yes. I would love to, you know. Yes, beautiful. बहुत अच्छे, fantastic. You know, these are messages. You know, I'm sure आप लोग सब grown up है. You know, you're all MBA students. So मुझे आपको ना कोई ऐसी चीज नहीं बतानी, आप बोले कि सर ऐसा क्या है, बट मैं आपको वो छोटी छोटी चीजें जो जिंदगी में आपके वैल्यू एडिशन करेगी ना, वो बताने जा रहा हूँ और बता रहा हूँ. क्यों पता है? दिस इज व्हाट आई हैव रीजन. अगर आप सोच सकते हैं, एक इंसान जिसके साथ दोस्त, उसके फ्रेंड्स कैसे थे, कूली. मैंने अपने आप ऑटो रिक्शा चलाई है, लगेज की ऑटो रिक्शा, ठेले चलाए हैं, तांगा गाड़ी चलाई है, साइकिलों में माल ढोया, अपने कंधे में माल ढोया है,
स्कूटर पर माल ढोया, मैंने क्या नहीं किया, मैंने जिंदगी में सब कुछ किया। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर दैट इन माय लाइफ आई हैव चेंज्ड अबाउट 15 बिजनेसेस। 15 बिजनेस मैंने चेंज किए। मुझे जहां प्रकृति लेके चली गई मैं चला गया। राइट नाउ आई एम सिटिंग इन गाजियाबाद इन उत्तर प्रदेश नियर नोएडा। आई एक्चुअली बिलोंग टू बैंगलोर। I was born in Delhi. I lived in Bangalore for more than 30 years. I'm a South Indian by heart in any case. मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो कन्नड़ा बोलते हैं। मैं कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम भी बोल लेता हूँ। I speak lot of language, about 10 languages बोलता हूँ मैं, because I speak Gujarati, Hindi, Rajasthani, Haryani and all that, Punjabi, etc. etc. So what happened, life मुझे जहाँ लेके चलेगी चला गया। और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, सेकंड इंटरेस्टिंग बात, 15 बिजनेस तो चेंज किए। I changed 22 houses in my life. कोई करता है 22 हाउसेस? आप सोच के देखें, आपको लगे ऐसे कैसे हो सकता है यार, क्यों चेंज करते हैं आप? मुझे जिस किस्मत जहां लेके चलेगी मैं चला गया। मैंने लड़ा नहीं। मैंने कहा इट्स ओके, आई विल एक्सेप्ट एनी चैलेंज एंड एवरीवेयर। एंड even at 61 years age, I am again saying I'm a man of 61 years with 45 years of experience and a 20-year-old youth's energy. This is what I am. Okay, and I'm still, जब तक मेरी सांसें चल रही है, I'm not going to retire. बिल्कुल रिटायरमेंट मैं नहीं करूंगा, ऊपर वाला करेगा, ठीक है ना? बट आई विल कंटिन्यू टू ऑपरेट। सो आई थिंक लेट्स कोलैबोरेट, लेट्स सपोर्ट ईच एवरीबॉडी, ऑल योर फ्रेंड्स एक्सेट्रा टू टेक इट फॉरवर्ड। आपको इंटर्नशिप तो करनी चाहिए, मस्ट डू, बिकॉज बिना इंटर्नशिप के यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। इंटर्नशिप शुड बी डन ऑनेस्टली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ग्रूमिंग एंड एटिक्वेट, you might think कि यार हमारे को तो ग्रूमिंग आती है, we know how to dress and this and that. It's not exactly enough. Let me assure you friends, I am not advocating कि भी सबीरा मर्चेंट क्या करती है, but she's a very big celebrity in a way, और 40-50 सालों से मिस इंडिया वगैरह को सबको तैयार करती रही है। She has her classes on online Facebook पे चेक कर सकते हैं। I think she charges about 3,000 rupees or so, but you must certainly look at her grooming and etiquette classes, because it will tell you how you should be grooming, how you should be behaving, how you should be talking. आपको प्लेट कहाँ रखनी है, ग्लास कहाँ रखना है, चम्मच कहाँ रखना है, कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे बात करनी है, कैसे डिस्कस करना है, and all the thing. She teaches beautifully well, and it comes at a small cost. You'll have to go to Switzerland for a finishing school to understand that, but I'm sure colleges में कई बार इस प्रकार के ना curriculum होते नहीं है, but grooming should be a part of the thing, so you can certainly do that, and you should certainly standardize the processes. क्योंकि आज आप जानते हैं MBA चाय वाला सबने सुना होगा। मैं पूछने के आई एम नॉट आस्किंग क्वेश्चन बट रादर आई एम गिविंग एन आंसर इटसेल्फ। ऑल ऑफ यू हैव हर्ड MBA चाय वाला, isn't it? Yes or no? Yes. So can you imagine कि one MBA चाय वाला became so famous that the whole world knows him today. And what is he doing? चाय। There's nothing wrong. कोई भी चीज खराब या अच्छी नहीं होती दोस्तों। आपकी उसके प्रति संभावना, आपकी उसके प्रति रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, anything is absolutely good. And MBA Chaiwala has become a poster boy today, and he's just not the only one. There are a number of people who are actually doing it. McDonald's started from one, and today I believe पूरे ग्लोब के अंदर McDonald more than 100,000, 1,00,000 से ज्यादा McDonald के स्टोर्स पूरे वर्ल्ड में होंगे। Google says 60,000 plus, but I am assuming it's more than that. Okay. तो आपको जैसे let's say you can always start small, right from let's say this Indian cuisine that's being done in America in Denver. So for example Bittu Tikki wala hai, he started this chart. For example, let's say I'm talking about this Chatter Putter is a Golgappa brand. Can you imagine? गोलगप्पे का ब्रांड है, 80 टाइप्स ऑफ गोलगप्पा दे डू। आज आप 10,000 रुपए से 10,000 रुपीज से आपने गोलगप्पे का कियोस्क लगा दिया, ऑटोमेट कर दिया, ब्यूटीफुल ग्लव्स वगैरह लगाए हुए हैं, there's a dispenser also, and you are giving in a very hygienic conditions, and then you have an iPad or maybe a mobile phone where people can come and register the way you do it in Chayos, etc. So what happens is people will become your customer for life, and then you can offer, all right, you have a birthday coming in, chalo, I'm offering you 1 plate golgappa free, or with 4 golgappa I give you 2 golgappa free. You can offer varieties of color, varieties of let's say flavors, etc. And I can assure you friend, मेरे गोलगप्पे वाले से बात हुई थी दिल्ली में ही। I was asking him, I took his interview and I asked him कि आप कितना पैसा कमा ले? तो बोला जी मैं शाम को 4 बजे आता हूँ, रात को 10 बजे तक खड़ा रहता हूँ, 6 hours में I more than do 2,000 rupees per day, मेरा रोज का कमाई है। बोला उसमें मेरे को करीब 800-700 रुपए मेरा माल का लगता है, 1,200 रुपए मैं रोज का कमा लेता हूँ। तो मैंने कहा तू एक्सपैंड क्यों नहीं कर रहा है? बोला सर मेरे पास लोग नहीं है।
This is where opportunity lies for people like you. मैं आपको ये नहीं कह रहा गोलगप्पे का बिजनेस शुरू कीजिए. I'm just telling you at a small cost what you can do. For example, let's say आप लोगों ने डिसीजन लिया कि all right, I start in a beautiful, fantastic manner. 10-25 रुपए मैंने beautiful kiosk बनाया, dispenser लगाया, mineral water bottle लगाई, gloves लगाया, उसके अंदर various flavors लगाए, and अच्छे से मैंने उसको गोलगप्पे को बेचना शुरू किया. I am assuming and saying this to you, and I'm making this statement very boldly to you, कि if you earn your 1,000 from one single kiosk by investing 10,000 rupees, and if you have 100 kiosks, that would mean 1 lakh rupees per day is your income. Can you imagine the kind of money that you could be making? So my suggestion and request to all of you is कि कोई बिजनेस छोटा या अच्छा बुरा नहीं होता. It depends कि आपका attitude क्या है. जब MBA चाय वाला के बारे में जानते हैं तो you are free to say कि I have a brand where I'm offering this, and Bit2Tiki work started from zero, from a roadside, is now more than 300 crore rupees brand. So you people should imbibe and take anything and everything on the. और क्या होता है ना, सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, because आप MBA students हैं, आप समझते हैं whatever you do, you will do it in a beautiful finesse style and etc. And people will love it. आज चाय उसकी 80 रुपए की चाय हम पी लेते हैं. क्यों पी लेते हैं? 10 रुपए की मार्केट में मिलती है ना रोडों पे, but still we prefer to go there and have our tea in a beautiful hygienic atmosphere and environment, and we love that tea and we feel proud about it. So same way when it is possible, I suggest and request all of you look at these small options and choices. कि आज DY पाटिल के आसपास लेट्स से आप लोगों ने लगाया कि वहां पे कियोस्क लगा लिया. पुणे तो वैसे ही इस तरह इज अ मैसिव प्लेस वेयर द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर देयर, एंड यू सेट अप एट एवरी प्लेस or 10, 20, 30 places and all the thing, standardize it, and later over a period of time start giving franchisee and all the thing. I can assure you this is a great business model. And it's biggest with just Golgappa. You don't have to do dahi balla and all the things. Just Golgappa is good enough to start with. You can tomorrow have juices also. You can have fruits also. You can have so many other things also. So this kind of kiosk and business can be created. All right, this is my request. Chai Garam. You're aware of Chai Point. Chai Garam is one organization which is actually giving a lot of franchisee these days. Chai Point also somebody started, and that is how these people have created a business out of nothing. Chai पीने का भी business को business होता है क्या? But people have created this. Now I'll show you a beautiful video. Sometimes you know what happens? We always think कि यार हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्या करें जिंदगी में, ये होता तो वो कर लेते. I will just show you. जितने मेरे बच्चे यहाँ सुन रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, you're not as poor as the ones you are looking at, isn't it? But they don't have anything to lose. They have everything to gain. इसलिए वो हमेशा सोचते हैं मुझे कुछ पा जाए, मैं मिल लूं. और हमारे पास बहुत कुछ होता है तो हम कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, बोलते हैं हमें जरूरत क्या है, हमारे पास तो सब कुछ है ना. इट्स ओके, आपके पास है क्या, आपके समाज के पास है क्या? Can you do something for everybody else? Because having born as a human being, it is our honest and responsibility. So I'll show you a small beautiful video कि जब हम सोचते हैं ना हमारे पास कुछ नहीं है, तो look at these people, वो क्या जिंदगी गुजरते हैं.
I'm sure this is a touching video. अच्छी लगी तो please डालिए. You liked it. Yes. Because these messages that I'm giving you is primarily to give you an awakening. मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, life is not kind. It's very difficult. All right. And when you see how others are going through, what others are going through, then you will always be thankful for whatever you have today. Normally हम क्या सोचते हैं, हमारे पास क्या है जिंदगी में, क्या नहीं है आपके पास, और जो नहीं है उसकी कामना जो कर रहे हैं तो उसको पा लीजिए ना. We can. We only need to believe in ourselves. We always think that others should give us, but are we ready to give it to others? These are some of the moments. चलिए, कितने लोग ऐसे हैं जिंदगी में जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, हाथ उठाए जल्दी से. यस सर, यस, बता डालिए, फटाफट डालिए. Come on, I want to hear from you. A lot of people. How many people have problems with their life? Just show quickly. Yes sir, yes, yes, बताइए. मेरी लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम है. I'm saying yes, 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 yes. ठीक है, आशुतोष, मोनिका, प्रियंका, या निसर, रेनोस. Yes, yes, beautiful, beautiful. बहुत अच्छे. Beautiful. चलिए, मैं आज आप लोगों को ऐसे लोगों से मिलवाने जा रहा हूं जिनकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है. मिलना चाहेंगे उनसे? You want to meet those people? Let me introduce you and let me take you to those people who have no problem. These are the people. They are the ones who have no problem with the life. Who are you? आप कौन है? You're alive. And if you're alive, I can assure you, till your last breaths, problem will not leave you. Problems are integral part of the life. Only those who have no life have no problem. But your life. So naturally, आपको जिंदगी में ना प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी समझना है. जैसे मैंने समझा, मैंने come and sit in my factory. I will tell everybody, अच्छा लाओ, किस की क्या प्रॉब्लम लेके आओ, चलो, let me sort it out. Let me try to do that. I thought it is just not easy, friends, to be here. So I think, in the life, if you are being faced with the problem, you should count yourself lucky. You know why? You're becoming stronger. And you're becoming a problem solver, and you're becoming a leader, and you are being recognized, you are being respected. These are not small things. So जिंदगी में प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानना है, अपॉर्चुनिटी मानना है. रोज सुबह शाम उससे लड़ना है. एंड प्रॉब्लम पता है किसके पास जाती है? जो वीक है. ओ माय गॉड, आई एम सो स्केयर्ड, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई एम नॉट गेटिंग दिस एंड आई एम नॉट एबल टू डू दैट. ओ प्रॉब्लम होती है, यस, यही है मेरा घर. आई विल नॉट लीव दिस पर्सन बिकॉज ही और शी इज ऑलवेज स्केयर्ड. So the problem will catch and till last breath it will not be. लेकिन अगर जो आपसे डर रही है, you are saying problem क्या, चलो इसको solution निकालते, तो problem will think, यार कमाल है यार, ये तो बहुत ही strong है, इसको तो डर ही नहीं लगता यार. तो क्या होगा? Problem will never come near you, because problem is not a problem, it's an opportunity, it's a challenge, and we can solve that, and we all solve this. But we get bogged down, so don't get bogged down. This is my request to all of you. Okay. चलिए, अभी हम एक काम करते हैं ना, एक गाना लास्ट का मैं आपको गाना सुना रहा हूं, ये प्रॉब्लम को लेकर के. ऑल राइट, सो लेट्स सिंग, वी कैन सिंग टुगेदर ऑल्सो. है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले. हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना. ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी. सो दोस्तों, ऐ जिंदगी गले लगा ले, क्योंकि हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना. आप जानते हैं हमारे कितने यंग बच्चे आज कितने बड़े बड़े मिलियनर्स, बिलियनर्स बन गए हैं. 40 से ज्यादा यूनिकॉर्न हमारे बच्चों ने क्रिएट किया है. अब मैं आपको एक लास्ट वीडियो दिखाने जा रहा हूं, एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट विद द Q&A बिकॉज आई एम श्योर इट्स टेकन अ लॉट ऑफ टाइम. दिस वीडियो इज फॉर अ जॉब, और ये जॉब ऑफर मैं आप सबको दे रहा हूं. It's a beautiful video. Please watch this very carefully. आप इतने से मेरा ध्यान से सुना. Thank you very much. I've been with you for 1 hour 45 minutes now. But I would like you people to listen to this beautiful video. And this is a job offer to all of you. Listen to this job offer. I'm sure I'm going to offer this job to you. Please take this. Just give me 1 second. Thank Sure. you. Sorry.
Hey, hi. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about that. How are you? Hi, nice to meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time. Constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh yeah, of course, yeah. Okay, so like no lunch? You can have lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No, not possible. that's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. Worry about when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all-encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing it for free. Yeah, pro bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. Oh. And they meet every requirement, don't they? Oh my God. Moms are the best. Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. Like the job? Want to take it? Can you believe our moms are doing this? Can you just put in your chat, I love you, Ma? There's nobody bigger and better than Ma. And you just saw that. Din raat, aakhri saans tak, she's always looking for, struggling to make you happen. Nobody better, nobody bigger. Please love your mom. Because you just heard the job description. And only moms can do that. And moms ke jaisa koi hota nahi hai. She's a God. She created us. So this is what I wanted to say. And I want to take this opportunity of thanking all of you. And as I said, at any given point of time, if you have anything to discuss with me, I'm always available. I'm sharing my, I will share my credentials with you.
But in the meantime, if Sohail sir, if you permit me, and in case you can play national anthem, then I'm ready with national anthem. We can do that, and I will share my credentials also with everybody, and I can go for Q&A. Hi, sir. Right. So would you like to play the national anthem right away? All right. I can start, sir. Jana Gana Mana Adhinayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jaladhi Taranga तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. I wanted to thank you very much, sir, and I wanted to just give my children that last slide in terms of my credentials, etc., whatever they want to. If you permit for a minute, just for a minute, and then I will start with the Q&A. These are my credentials. You can send me a request on Facebook, and you can subscribe to my YouTube also. I'm not selling my channel, but I'm just saying that a lot of videos, there are more than 300 videos on YouTube, and you can also log in with on LinkedIn, Instagram, you can connect with me, and wherever necessary, you can certainly send me WhatsApp and ask me personal questions, private questions, anything to do with the career or anything to do with the counseling, anything that you desire. And I can assure you, आप लोग factory visit आना चाहते हैं, तो I can get it arranged. As I said, because being chairman gives me access to more than 350 factories in Uttar Pradesh alone, and in the entire northern India, there are 3,000 and odd members that we have. Pan India 9,000 members are there in CII. So I'll try to help you whichever way we can. If you want to set up a project, I can get the financing funding done. I can get the project report done, and etc. Anything that is required for you to be successful, I'm here for a lifetime till last breath without any expectations. This is my commitment to all of you. Thank you very much. That was lovely, sir. Thank you so much indeed. Ladies and gentlemen, I see that most of you have liked the session, and I'm thanking sir for the wonderful session. Don't see any question as such, sir. You're so effective. Yeah, please ask questions, because I want to give you that opportunity to talk to me. I would really love to hear that, and I'm all yours. आपके मन में कभी ये नहीं आया कि यार सुशील अग्रवाल की कोई एक्सपेक्टेशन तो होगी? भगवान ने बहुत दिया है, प्रकृति ने बहुत दिया है. So there is a lovely question from Aarti, and we're like, how to achieve success without compromising family life? It's a little trade-off. Let me assure you, you'll have to leave a little bit of your peace of mind and patience in terms of family life. कहीं ना कहीं छोटे-मोटे compromise होती है, and I want to be very honest and admit this. Let's say 38 years that I'm married now. I also missed a lot of moments, when my children were growing up and my wife has been neglected and all the things. So we can't really say that it was 100% balance. Yes, but when it was needed, I did my best. But I assure you, friends, today me and my wife are having greatest time of our life. हम अगर एक दूसरे से बातचीत में नहीं कर रहे हैं ना, we respect so much, we appreciate so much, and the amount of freedom that we have today, we are actually loving the conversation, and we are sharing all those thoughts and values. So there is a certain amount of trade-off. मैंने कहा ना, there will be a small challenge, because you'll have to give certain amount of patience or probably preference to your work to actually achieve those milestones, and there will be a small compromise. So be prepared for that. Some lovely questions coming up for you, sir. What keeps you motivated, and what has kept you motivated all these years? Especially when there are times that you lose track as well. एक तो मेरी गरीबी जिससे मैं रोज लड़ता हूँ, एक आपका प्यार,
जो मुझे जीने की इजाजत देता है, मुझे जीने के लिए आगे बढ़ता है. क्योंकि whenever you people love so much, respect and give this kind of shower, this blessing and all things, believe me दोस्तों, मैं तो I'm 61 is an age for me. I'm actually 16, 16, and I'd like to be like this till my last breath. So I'm absolutely always charged. मतलब शायद बच्चे भी कहीं बोलते हैं पापा पता नहीं थकते नहीं है. तो वो ड्यूरासेल की बैटरी के बारे में ऐड आती थी, थकती नहीं है. तो आई विल से मेरे माइंड में एक ड्यूरासेल की बैटरी है जो लेटर से आप लोगों से आती है, and I get my energy from all of you when you people give me so much respect and pay, let's say give me so much of blessing. Believe me, it means a lot. And my energy, I come here for a vested interest. मेरा अपना लालच है. लालच क्या पता है? मैं तो अभी लेट्स से अदरवाइज मैं बूढ़ों के साथ रहता, लोग बोलते हैं अरे बूढ़ा हो गया भाई, चलो एक काम करते स्टिक लेके वॉक करेंगे. मैं बच्चों के साथ रहता हूँ तो सुबह शाम पार्टी करता हूँ, मस्ती करता हूँ, हंगामा करता हूँ, डांस करता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, पता नहीं क्या क्या करता हूँ. अभी ये सेशन क्लोज होने के बाद 3 o'clock we are having a fantastic session coming in IPM college where there's a fest happening and I'm part of that, and we're going to have a rock the evening today. So I'm living my life with the youth, with all of you, and that's why I'm alive, and that's why I'm kicking in, energy is there. So we have a lovely question again, and it is Rishikesh. He says, how do you handle failures and convert them into opportunities? This is beautiful question. Believe me, when a failure comes in, I don't get bogged down. I extremely become charged. Then in that case, that overnight, I'm probably not even sleep, and I'll just think, I just go kaise theek karna, kaise chahiye. Aap jante hain, Thomas Edison had more than 1,000 patents to his account. And when his factory got burned, people, he started laughing. Then people said, he has become mad because factory jal gayi na, to isliye rone lag gaya. So no, I'm laughing because whatever mistake I had done, everything is all now gone. Everything I remember, and I know how to do that. So same way, whenever there's a failure that comes to my way, I actually take it as a challenge and I start working towards it. And believe me, friends, you find a solution and you feel, oh my God, hey presto, I reached wherever I wanted to. So I'm always on the hunt, and I'm always on lookout for a problem. मैंने बताया, I'm a troubleshooter in the factory. Whenever I'm sitting, I'll say, चलो सब लेके आ जाओ. So, and believe me, once you start loving, it's like solving the puzzle. Or you're doing checkmate on the chessboard. आपने checkmate करना तो आपको आना तो चाहिए ना. आपने checkmate किया तो the amount of satisfaction that you get, the same satisfaction I get by solving the problem. So I don't get bogged down by the failure. I get charged. It's lovely. So there are few other questions that I could possibly pick up from here, and one of them is from Rajneesh Kaur, and she says that, sir, I have a question. Sometimes the nightmares of being a failure in life frightens us all so much that our personal life is also affected. How do you overcome that in real life? See, it depends. मैंने कहा ना, if you plan to succeed, then it will always affect you every time. You will be always in that anxious mode. Oh my God, if I fail, what happens? Oh my God, what will my friends think? What my parents say? This will happen, that will happen. But if you say it's okay, जो कामयाब होना है वही तो कोशिश करेगा, है? जो कोशिश ही नहीं कर सकता वो कामयाब कैसे होगा? So it's absolutely fine, and don't let that affect your personal morale, your personal life, your balance of mind, because what you're doing, others are not doing. मैंने कहा ना, पागल बनना पड़ता है. And I asked how many people are पागल. A lot of people raise their hand. I'm a big पागल. मैं तो सबसे बड़ा पागल मैं ही हूँ. You know why? Because I do something very unconventional, very different way. And while I'm doing that, I love that energy and I love that channel. Just imagine 61 year की age में I have everything at my disposal. Like से घर है, गाड़ी है, फैक्ट्री, बंगला, सब जो चाहिए, जिंदगी की सारी खुशियां हैं. So what? इसका मतलब मुझे तो घर पे आराम से रिलैक्स करना चाहिए, जिंदगी जीनी चाहिए, पीछे देना चाहिए. No, it will now give me a lot of energy to say, all right, Sushil Aggarwal, जो तुमने सीखा है, now is the time to pay back to the society. So let's work towards it, make it happen. So I can only tell you, don't let failures affect your personal life or your morale. Morale down नहीं होना चाहिए. Morale high है, तो you'll absolutely be winning. Right. So I have a question from Balasaheb Gore. He's saying that, how do you strike a work-life balance? See, when you love your work, actually that itself becomes your life. For me, मेरा जो मंदिर है, मेरी पूजा जो है ना, मेरा काम है, and so much passion I have, I can't tell you. And because I love,
my friends and my colleagues today are all from the same fraternity, and the kind of networking that I have is with a similar thought process, people, intellectual people. मैंने कहा संगति का असर. I live with the people who probably think alike. And that's what keeps me motivating all the time. I don't allow myself to get distracted. Let's say कि loose talk कर रहे हैं लोग, बेकार की बातें कर रहे हैं, या let's say here से कर रहे हैं all thing. I just stay away from that. I shy away from that, and I just do not want to be part of the conversation. I will not jump, and I will not say गलत है सही है. I will leave it to them, and I will say, all right, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ बैठना है. और एक रिक्वेस्ट है मेरी सारे फ्रेंड्स है, बच्चे जितने बैठे हैं आप लोग, कि in case if you're the best amongst your group, leave that group today. You know why? Because if you're Chaudhary and you're the best, then you have nothing to learn, but you'll give a lot to others. So if you want to learn, be the poorest amongst those friends and peers, जहाँ आपको लगे कि आपको बहुत कुछ सीखना, and you will learn a lot. So be that learning mode. Startup ke bare mein, yes, we can, of course, you can certainly connect with me. I gave my mobile number. Normally I don't give it to the public, but DY Patil, I've been associated for quite some time, and thanks to all of you. And I love energy of mere jo Facebook friends hai, majority of them are college students. And or LinkedIn for that matter. So you can certainly connect with me offline on WhatsApp, and I can assure you I will respond. If I'm busy in a meeting, let's say if the call's coming, then you send me an audio message, send me images, send me questions, send me issues and challenges. And I work from morning 5 o'clock till night 10:30, and I work 365 days, even Sundays. Sundays I double up my work. Startup, there are a lot of startups happening. Startup is your thought. Just have any thought, and you'll start working to make it happen. जैसे मैंने कहा ना, गोलगप्पे का startup बनाना, कुछ भी करना, there's so many things that can be done. And I'm sure today, let's say Silicon Valley की बात करें, तो after America, India has become the hotbed now in terms of the startup system, that is the ecosystem that has got created. So there's an interesting question. Is what career mistake has given you the biggest lesson? Career mistake that has given biggest lesson is not to take that initiative, not to accept that opportunity. Because there were opportunity that came my way, probably I shied away. And I thought, nahi, arey, nahi karna chahiye, nahi kar sakte, and all the thing. And I lost. That's how I did 15 businesses. And I was always thinking, yaar, aisa kyun hota hai? And then suddenly I found that probably I was not ready all the time to actually accept the challenges. And I was always thinking and looking for greener pasture. Arey, bada easy se kaam jo mil jayega, wo karenge. Then I realized, no, there's no easy way out. So the career biggest mistake when people do is that they keep hopping, they keep changing the way I did it. And once you keep hopping and changing, you'll never be master of that. It's like jack of all, master of none. That's what I became. But now, in the past 20 years, I've been running this organization, and now today I'm in the driving seat. I'm not only guiding the whole country, I'm also talking of policy advocacy, and I'm creating designs, etc. I've created more than 25 designs on my own, which are patented and which I got registration from Government of India. So these are something, expertise that I could actually get. That learning came a little late to me. So I would urge that, wherever you get a challenge, accept it. Don't give up. And believe me, you will hone your skill, you will harness, and you will actually be fantastic, and you will be able to achieve a milestone which nobody else has done it. Please go ahead. Right, so thank you so much. So how do you overcome the fear of unknown? Fear of? Unknown. Sorry, Unknown. If in case we start knowing everything unknown, then we would not live. We would start dying. Let unknown be unknown. You are flying. You don't know. When you look at the land, probably you say, oh my God, 40,000 feet, I can fall. Fear. But you know very well, it will not fall. So same way, unknown, let it remain unknown. We do not want to be known. Let's say I'm sitting here, and let's say there's a snake in the next room. How does it bother me? But if I know there's a snake, there's a lion, there's a leopard here and there, then I'll be insecure. I'll be, oh my God, pata nahi kya ho jayega. So let unknown be unknown, doesn't matter. And whatever is known, also be conscious of it. It's okay, it's not going to harm you. And you are prepared to actually take care of the challenges as it comes to you in the life.
when you're not prepared and you just take head on a lot of things, just have a zindagi mein bahut sari cheez, debates or discussions or activity or actions or we don't know how to do that, and we just become head on and we say no, we'll do that, then we feel miserable, then we feel little let down kind of situation. Don't let it happen. If you don't know, just remain quiet, sit quiet, listen to that and think how it can be little different and better, and once you're in the driving seat, then start delivering it and people will respect you. I think I'll take just one question that's come from Sachin, and I firmly believe that is pretty much good with the stock markets, I suppose. So he has a question, says that on the daily upper circuit on Avro share price in the stock market, what is the special turnout that's done in the organization to make sure that the share prices have increased? Your business insight will help. Thank you, Sachin. Incidentally, we are a very undervalued company. And the moment everybody realized and recognized that this company has huge potential to make a big mark, we migrated from NSE Emerge to main board of National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange on 7th April. And we've been hitting upper circuit ever since we started doing that, even before that. So today, every shareholder is recognizing and realizing that this company's got a huge potential. It's taken 2 decades for company to start delivering results. And over a period of time, we are going to deliver stellar results in terms of rewarding not only the minority shareholder, but also adding value to the society by way of revenues, taxes, and jobs, etc. So that everybody recognizes and realizes. And that's how it's been hitting upper circuit every day. So thank you so much. You've given lovely insights to our learners today. With this, now I'd like to call upon Dr. DPU-COL to the closing note. I'll share this PPT. I think, of course, anyway, this is available on the Facebook, also YouTube, I'm sure, live. So I would request that, all my friends and colleagues can do that. And I'm again requesting, बच्चों मैं आपसे request करके हाथ जोड़ के विनती करके कह रहा हूँ, आपको किसी प्रकार के भी कोई भी counseling हो, even otherwise, let's say even studying in India and abroad, wherever, because my one student was studying in Singapore, another was studying in America. So I'm aware of certain things. I can guide you reasonably well. And I'll tell you one thing interestingly, आप सोचें, sir, आप क्यों करेंगे? आपका time है क्या? Yes, मेरे पास time है. इन सब चीजों में मेरे पास time है. Because all that mundane and day-to-day operations or passive work that I have to do have been taken over by a lot of people. So I have nothing there to contribute except taking care of the owners and new challenges that come my way. Thank you so much, sir. All our learners are motivated by your session, sir. Thank you so much. So I, Dr. DPU-COL, on behalf of Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth Center for Online Learning, take this opportunity to propose the vote of thanks on the occasion of DEEKSHARAMBH, the induction program for our January 22 batch. I thank Sushi Aggarwal, sir, Chairman Avro India Limited, for such an inspiring talk on how to face the challenges in a world which is volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Thank you so much, sir, for a wonderful session and interactive session. It was so relatable to all of our lives. I'm sure all of us are motivated here by the experiences that you have shared. Thank you, sir, so much for your valuable time. Thank you again, sir. At this outset, I take the opportunity to thank our Honorable Chancellor P.D. Patil, sir, our Honorable Pro-Chancellor Dr. Bhagyashree Patil, Madam, Vice Chancellor N.J. Pawar, sir, Executive Director Dr. Smita Jazab, Madam, Dr. Safia Farooqui, Madam, Director Center for Online Learning, and Professor B.V. Marathi, sir. I also extend my heartfelt thanks to all the faculty members, staff, and the technical team for their constant support. And a big thank you to all my dear learners for participating in this session and making this a successful one. I conclude by saying that we will be successful, if not immediately, but definitely. Thank you. Yes. Thank you, ma'am. Thank you very much for giving this wonderful opportunity. I'm extremely grateful to the entire DPU universe, for that matter, and the university, and of course my sister Safia ma'am and Sohail sir for all these beautiful words. And I'm looking forward to a continuous engagement over a period of time in various manners and ways that we can to collaborate and have a great industry academic connect. Right. And well, I can only say thank you very much. Thanks a lot.
Thank you so much, sir. We declare the session closed here. Thank you. Thank you. Bye-bye.